Assalamu alaikum viewers, assalamu alaikum and welcome to a new episode of Dr.Guryas Take. जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, हम आ रहे हैं एक नए सेगमेंट के साथ जिसका नाम है आस्क अ डॉक्टर। आज इस सिलसिले का पहला शो है और हमारे इस पहले शो की जो सबसे पहली डॉक्टर हैं उनका नाम है डॉक्टर ज़ैरिश। और डॉक्टर ज़ैरिश यहाँ मिसिसागा में एज अ फैमिली मेडिसिन स्पेशलिस्ट के तौर पे काम कर रही हैं बहुत सालों से। तो चलें उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं और विमेंस हेल्थ के हवाले से उनसे कुछ सवाल पूछेंगे और फिर देखते हैं कि वो क्या कहती हैं। चलें जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर ज़ैरिश, क्या हाल है? I'm good, thank you. And how are you all? I'm glad to be on this show, and I hope that I'll be able to give some good information. Dr. Zarish, क्या हाल है, कैसी हैं आप? I'm good, thank you. Is this the second part now? This is the second part now. अब आप बताएं, अब हम किसके बारे में बात करें? आज का हमारा टॉपिक क्या होना चाहिए? Menopause? Yeah, I think menopause is good. Menopause का cover देना definitely चाहिए. Again, जैसे कि मैंने कहा था ना कि हमारी सोसाइटी में औरतें कब जाती when they're young and in their flourishing years, बच्चे पैदा करने they're going, या बच्चे पैदा नहीं हो रहे तो फिर जा रही होती है fertility clinics और ये वो, you know, that's where the story said. But unfortunately, the other end is also quite dramatic for the woman जब उनका ये पूरा fertility का scene खत्म होता है. ठीक है ना? Let's start with what exactly is menopause. हम जब हम कहते हैं कि हम pre-menopausal उस पे आ रहे हैं और menopausal पे आ रहे हैं, तो is there like obviously it has something to do with cycle, जो menstrual cycle हमारी होती है. पहली बात है कि it's a transition. A woman's body's transition from being fertile to coming into an infertile state. I think this is a very simple language is putting it, right? And needless to say, there is a lot of hormonal changes that are going on, a lot. ठीक है ना? And I think if men had to undergo these hormonal changes for even 24 hours, they could not bear it. Because अगर आप सिर्फ उसका menstrual cycle को आप study कर सकें, and you can get an idea of, you know, the immense changes that the woman's body has to undergo when she's getting, you know, that hormonal change inside. तो उसमें आपको समझ में आता है कि what's happening inside the body. We talk about hormones and the ways bodies respond. Everybody's bodies or everybody's response is individual, right? हर कोई different तरीके से react करेगा to this change. किसी और को कुछ भी नहीं होगा. They'll go through it very, you know, in a very normal way. Some women have a hard time. Things women commonly complain about when they come for menopause is, again, interesting enough. Now I'm going to say this here. The way women in our community, how I catch menopausal symptoms is when they come for their pap tests, when they come for their breast exams. That's my opening window to actually talk about menopause. बहुत rare होता है कि I'll get a Pakistani woman or an Indian woman coming to me and be talking just about menopause. You know, I've hit menopause and I'm having some changes. ये आपको Caucasian community में मिलेगा because women are more aware of their health, of their needs, and more focused on themselves. हमारी community की औरतें जो है ना वो अपने चक्करों में पड़ी रहती हैं, घर में, बच्चों में, मियाँ में, especially the middle-aged woman, as you know, बेटियों की शादियों में लगी होगी, stuff like that. She won't focus on what's going on with her. तो उस पे जो मेन चीजें मैंने देखी हैं, when I do the pap test, we talk about sexual health, तो वहां पर is problem, which I'm sure a lot of women in the society will relate with. Perimenopause किसको कहते हैं? Menopause is never like, it's not like a shutdown, it's a गाड़ी start की, गाड़ी बंद कर दी, it's not like that. It's a transition that takes over a few years, right? 2-3 साल, 4 साल भी लग सकते हैं, और उस औरत की body पे gradually वो changes आते हैं over those years. What are the changes? Typically, जैसे मैंने कहा था कि sex becomes painful, and that's a problem. These are things nobody will actually talk about, which is why I'm just voicing them out, right? Number 2, they may complain of mood swings. Depression is common, anxiety is common, crying spells, breaking down, feeling you can't cope with everyday stresses. Blame goes on the stresses itself. But the problem is stresses to shuru se the na. They what's happening now? Why am I breaking down now? It's because of the age, right? And the lack of hormones. It's the estrogen. When the estrogen goes away, आपके अंदर वो psychological strength I think कम हो जाती है औरतों की, is what I've noticed. तो वो चीज आती है. उसके बाद ऑब्वियसली घर में और इश्यूज शुरू हो जाते हैं, मैरिटल इश्यूज होते हैं, मैरिटल डिस्कॉर्ड होते हैं, बच्चों के साथ, you know, the things that happen with teenagers and all that starts kicking in.
कि दो कॉमनेस्ट चीजें ना, this is from a layman's point of view. From a doctor's point of view, what really worries us about is osteoporosis or weakening of the bones, right? That's what's happening inside hormonally. That has to be looked after too. A different talk on its own. So osteoporosis के guidelines में ये होता है कि we have special testing called bone mineral density testing, right? So in the guidelines, we start for women who are for the आम पब्लिक के लिए 65 प्लस की औरतों में शुरू होता है, ठीक है, वो हर 2 साल बाद वो टेस्ट होता है. But if you bring it in relevance to this topic, women who have early menopause, early menopause is age of 45, right? They are more prone to getting osteoporosis earlier. तो उन लोगों की bone mineral density हम जल्दी शुरू करते हैं. We don't wait for them to turn 65. Now, on this topic, good, you reminded me. All women who are menopausal should be taking vitamin D. That is 2,000 units, and calcium 1,200 milligrams every day. For the rest of the when should they start? Like, at what age should they start taking these medicines? Again, when you hit menopause, right? तो क्योंकि हम कनाडा में रहते हैं तो विटामिन डी तो मैं वैसे भी औरतों को बताती हूँ. लाइक इफ योर पीरियड्स शुरू जब पेरीमेनोपॉजल आप होते हैं तो पीरियड स्टार्ट स्पेसिंग आउट यूजुअली, ठीक है ना, 2 महीने नहीं आए, 3 महीने नहीं आए, जब पूरे 12 months गुजर जाते हैं, then you're into menopause. Now this is another education point I want women to know very clearly in the society if they don't know कि if आपको पूरा 1 साल हो गया और पीरियड नहीं आया और फिर अचानक से पीरियड आने लग जाए, you have to go and tell your family doctor. Why? Because this is called postmenopausal bleeding, and this is a risk for uterine cancer. अब वुमन के यूट्रस के क्या क्या पार्ट्स है जो कैंसर हो सकता है? सर्विक्स है जो हमने पैप टेस्ट से कवर कर लिया. Then is the inner part of the uterus. Cervix बच्चेदानी का मुंह जो कहते हैं ना उर्दू में, वो तो वो होता है. Uterus is the inner वाला part. Uterine cancer के स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होते, but this is one of the big signs. If you have not had a period for a whole year and 1 साल बाद पीरियड शुरू होता है, और ये यूजुअली 50 प्लस की औरतों में होता है यूट्राइन कैंसर. So you have to let your doctor know ताकि वो आपके further testing कर सके, right? Then we have ovarian cancer, जो तीसरा ovaries होती हैं. Unfortunately, ovarian cancer का कोई screening test नहीं है. These tumors are very silent, they're highly malignant, and they are very, very, very difficult for a doctor to pick up with no signs and symptoms. And unfortunately, they will only present at a very late stage जब उनको बचाना मुश्किल हो जाता है. So that is something, and I've seen ovarian cancer, and unfortunately, मैंने जिस patient में किया था, she was at stage 4 when I picked her, and she agreed as well. I mean, I had so many sleepless nights कि क्या miss हो गया उस case में. मैंने file खोल कर खुरेद मारी, I could not find anything. Patient के साथ बैठी, we cried together, and she said कि doctor, this is not your fault. She had been coming regularly for her physicals, sub tests, हर चीज. कहती मुझे खुद भी नहीं पता चला कि मेरे साथ हुआ क्या है. And she just noticed that her belly was becoming big. She was already overweight, that lady, right? तो जब belly का examination हमने किया तो मैंने देखा कि she's put on weight. मैंने कहा belly थोड़ी सी bloated लग रही है, but nothing unusual. तो मैंने कहा let's have an ultrasound. Ultrasound किया तो it was like cancer spread all over in the belly. तो ovarian cancer का कोई वो नहीं है. और मेरे पास वो आई भी, I think she had come for a routine refill of medication. For blood pressure. I looked at her and I said, what happened to you? You put on so much weight. And she goes, oh doctor, it's just the winter. I was living in Alberta, तो वहाँ तो winter बहुत ही बुरी होती है. तो मैंने कहा, you need to get your exercise. But look, your blood pressure pills पर हैं, you know, blood pressure बढ़ जाएगा. तो मैंने कहा, I want to examine your belly. पता नहीं, you know, something didn't seem right. I put her on the couch, examine किया. Again, I stood, मैंने कहा, इतना weight put on, मैंने कहा ultrasound करवाना, just on a hunch. The woman had no symptoms at all. I had no reason to suspect cancer, other than I noticed her. Usually cancer में आपको होगा ना कि weight कम हो जाता है, जो हम सुनते हैं कि anorexia हुआ, weight loss है. Nothing, she was fine. She just looked huge. And that put me into a frenzy कि मैंने इनको जब last देखा था 3 or 4 months ago. What has happened in these 3-4 months to make her put on so much weight? The opposite end of the spectrum. It is so sudden, like मतलब कितना एकदम से suddenly हुआ है कि within the span of. Should be grateful in cancers के screening tests हमारे पास हैं, तरीके हैं पिक करने के. Those we should at least go for those ones. So, Beryl, that is a little sidetrack हो गया topic से. Coming back to menopause, we went back to cancer there. तो ये एज होती है जहाँ पर आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं. And then what to do after that? कि अगर आपको लगे कि you are getting any of these symptoms, इसमें hot flashes भी आ सकते हैं, mood swings हैं, painful intercourse हो गया, speak to your doctor, let them know कि this is what's happened. And अगर the whole के दोबारा period शुरू हो जाए तो फिर तो definitely बताना होता है, because you're not supposed to be getting it after a whole year like that, right? तो
इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि अगर 1 साल बाद पीरियड आ गया तो इट इज ओनली कैंसर. Don't take that. That's the wrong message to take home. It is just a red flag that you have to inform your physician, right? तो उसमें फिर इसको पहले क्लियर कर देते हैं डॉक्टर ज़ारिश के ब्लीडिंग. व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय ब्लीडिंग? लाइक इट शुड बी लाइक रेड ब्लीडिंग, या फिर वो जो स्पॉटिंग जिसको हम कहते हैं कि ब्राउन डिस्चार्ज होता है, एनीथिंग इसको ब्राउन स्पॉटिंग भी आ जाए, वैजिनल डिस्चार्ज एबनॉर्मल सा कलर का हो रहा हो, ब्लीडिंग तो डेफिनेटली जस्ट हैव टू रिपोर्ट इट. तो उसमें gonna ask you to do your pelvic ultrasound करवाएंगे, and of course अगर पैप टेस्ट नहीं होगा तो वो भी होगा, right? This is what will be done. तो रेगुलरली अपने फिजिशियन से साल में एक दफा विजिट जरूर करवाएं, ठीक है. दिस इज अ गुड वे ऑफ एड्रेसिंग ऑल दीज थिंग्स कि वंस यू क्रॉस्ड 50 एटलीस्ट पॉप इनटू योर डॉक्टर्स ऑफिस वंस अ ईयर, ठीक है ना, कि डॉक्टर इज समथिंग दैट्स मिसिंग और समथिंग नीड्स टू बी डन. द डॉक्टर विल बी एबल टू टेल यू कि हाँ भी ये चीजें हमें करनी है, ताकि आपको पता हो कि नथिंग हैज बीन मिस्ड अबाउट योर हेल्थ, राइट. क्योंकि इंसान को कभी नहीं याद रहता, 3-3 साल बाद अगर पैप टेस्ट हो रहा हो या 2 साल बाद मेमोग्राम, यू फॉरगेट द डेट्स, राइट. यहाँ तो ये है कि द गवर्नमेंट सेंड्स यू अ लेटर होम इन ओंटारियो एंड यू गेट टू नो कि हाँ भी आई हैव टू गो इन. लेकिन देयर आर लॉट ऑफ अदर कंट्रीज जहाँ वी डोंट हैव दीस फैसिलिटीज. तो अगर आप खुद से जाके पूछेंगे, बात करेंगे, तो देन यू नो समबडी विल लेट यू नो कि हाँ भी आपका जरूरी है, करना है कि नहीं करना. तो मेनोपॉज की वंस अगेन एक तो है इसको रिकॉग्नाइज करना कि ठीक है दिस इज मेनोपॉज. नंबर 2, कैन समथिंग बी डन अबाउट इट? आंसर इज यस. Again, people are scared about going to a doctor's office and talking about menopause because of, you know, दवाइयाँ क्या दे दी जाएंगी, hormones दे दी जाएंगी, antidepressants दे दिए जाएंगे, you know, stuff like that. उसके अपने taboos and issues हैं, which maybe we can discuss at length later. लेकिन the thing is कि if your life is being affected so much by these symptoms, then I think it's worthwhile going and trying the treatments as well, right? Talk to the doctor. उनसे पूछें कि भी क्या treatments हमारे पास available हैं. पहले about 20 years ago when I trained and came out, menopause के लिए HRT ही होता था, right? Hormone response therapy, and they were like pills to take, hormones. As the years went ahead, a lot of research came out, and they've discovered that those hormones taken long term are not safe, right? So then came the era of local estrogens or local vaginal, for example, vaginal atrophy. जैसे मैंने कहा कि अब जो है there are only two indications in which hormones are actually used for, and one is vaginal atrophy or painful intercourse के लिए दी जाती है, and second is for the osteoporosis prevention के लिए. तो vaginal atrophy very common, very simple. उसमें आपको vaginal creams दे दी जाती हैं to apply, which are applied internally and twice a week or thrice a week, and they give you the relief you need. Can be used for very very long time, very safely, क्योंकि उसमें से आपके blood stream में बहुत कम जाता है hormone, and it's not harmful then, right? Similarly, for the mood swings, you have what we call typically the antidepressants, आजकल जो बहुत यूज होते हैं, SSRIs हैं, उनसे भी घबराने की जरूरत नहीं है, right? So, because we are looking at quality of life here. Typically, menopausal symptoms औरतों को पीरियड बंद होने के 2-4 साल तक बॉदर करते हैं, right? And then things get better. So these medications can help you ride over that time period. Of course, in medicine, there's never a hard and fast rule. You can't say that Dr.Zarish ने कहा था कि menopause की दवाइयाँ 2 साल नहीं पड़ती. Everyone is individual in the ways that they manage their life. किसी को और भी लंबाई जरूरत पड़ जाती है. लेकिन I think at this point, if we can get the message across that this is something you need to know about your health as a woman at that age, and there are specialists out there that can help you. Pakistan में definitely there are gynecologists जहाँ आप जा सकते हैं. You can talk about menopause, their symptoms, and I'm sure they can help you out there as well. I think अब वहाँ पर भी local estrogens वगैरह सब available होंगी in practicing. It's just a matter of getting. What I like about the Canadian practice is the family doctor is your gateway, right? And family doctors को कम से कम अगर खुद नहीं पता हो तो they're able to channelize you कि हाँ भी आप यहाँ जाके information दे सकते हो. तो आपको as a patient इतनी मगजमारी नहीं करनी पड़ती. पाकिस्तान में it's like you know patients खुद ब खुद जा रहे होते हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, you know, taking the pick of doctors कि क्या करना है. तो I take advantage of this healthcare system that you have a family doctor you can actually go and ask about your health. Well, in fact, मैं तो कहती हूँ 80% of the women who actually get all these symptoms as far as menopause is concerned, I don't think they even go to a doctor. Even here, they just rough it out. So how would you suggest? What would you suggest to that? Okay, कर लें rough out, like if it's not bothering you, if it's not sort of आपके everyday life में कोई बहुत ज़्यादा changes नहीं आ रही,
तो उसको रफ आउट कर लें या इट्स So कंपल्सरी कि वो obviously, बात करें? for any woman at that age in life, it's important to be maintaining a healthy lifestyle. Hmm. Menopause के symptoms आप बहुत सी चीजें एक healthy lifestyle से curb कर सकते हैं, right? If you exercise regularly, look after your weight, look after eating habits, और क्या मतलब स्ट्रेस फ्री तो हर कोई नहीं रह सकता, लेकिन कम से कम अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज ऐसे बना लें कि अपने आप को इतना बिजी ना रखें. मुझे होता है ना बहुत सारी मल्टीटास्किंग और ये भी वो भी, जो when we are younger we can actually do. I think with the aging process, when you're coming towards menopause, you need to let your body take a rest. Give it some time. And that helps a lot. मैंने देखा है जो औरतें उस एज में उसी तरह लगी हुई जैसे मिड 30s में लगी हुई, करियर्स भी हैं, ये भी है, वो भी, they have a harder time को. If you're able to just sit back and let go a bit, working hours अपने कम कर दें, पार्ट टाइम हो जाएं, जो भी आपके लाइफ की सिचुएशन, इफ यू वर्किंग पर्सन या घर में अगर चीजें हैं तो स्टार्ट डेलीगेटिंग योर चोर्स टू चिल्ड्रन के भी, आई नीड माई मी टाइम नाउ, ठीक है ना, बहुत हो गया, मैं अब वो जिम्मेदारी ले, मतलब वो चीज एक्सेप्ट करना और समझना कि नाउ आई एम यू नो entering menopause. I need to slow down a bit. थोड़े से आपकी गाड़ी को थोड़ा ब्रेक लगा दें. तो those people cope better. You know, why not? You don't have to rush. Doctors का access उन लोगों के लिए है जिनका menopause symptoms उनको इतना ज्यादा bother कर रहा है कि they're unable to cope with their daily life. Exactly. That's where you need to. Yeah, right? That was my point. Healthy diet में, जिसमें आजकल तो बहुत रिवाज है कि कार्बोहाइड्रेट्स कम किए जाए अपने डाइट में. Maintaining a body weight, again, ideal body weight का तो word नहीं use होना चाहिए, लेकिन I think if you lead a sensible life in which you're getting regular exercise, जिसमें at least 30 minutes is recommended for everybody 6 days a week. 30 minutes what? Walking, jogging, cardio? Definition to that is called moderate physical activity. Moderate physical activity में जो basic चीज जो हर कोई कर सकता है is putting on a pair of joggers and going for a brisk walk. The brisk should be a brisk walk. ये सब टहलना वहलना नहीं कि आप जो आराम से टहलते वहलते जा रहे हैं गप्पे मार रहे हैं, not that. It should be a brisk walk in which you're able to say you're walking with a partner, so you should be able to talk to that person, but you should still be able to, मतलब इतना brisk हो के बात आप कर सको, लेकिन not to be so short of, not to have severe shortness of breath कि भी आपसे बात ना की जा रही, इतना एक स्पीड मेंटेन करें. उसके अलावा मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी में डेफिनेटली जॉगिंग आती है, बाइकिंग आती है, जिम एक्सरसाइजेस आते हैं, वो सब उसमें आते हैं. लेकिन why I talk about just going for a brisk walk is like, I think it's the cheapest and most accessible, the easiest thing a person can do, right? When I talk about losing weight to people, coming back to the menopause scenario, a lot of these women are middle-aged, घर की जिम्मेदारियां बहुत, they don't have time, right? So when I talk about weight loss, मैं सबसे पहले कहते हैं डॉक्टर मैंने जिम की मेंबरशिप ले ली है. And I start laughing. मैंने कहा मेंबरशिप ले ली, जाते भी है कि नहीं जाते? Don't have time to even go to the gym. We have to be realistic. टाइम है कि नहीं है? क्योंकि एक औरत की लाइफ बाज़ दफा अगर हाउसवाइफ भी होती, it's a very busy life. You are running your schedule on other people. कि उससे इस वक्त यहाँ जाना, उस बेचारी औरत के पास वो आधा घंटा भी अपने लिए बड़ी मुश्किल से निकलता होगा. She has to sit down and jot on कि डॉक्टर ने कहा था कि 30 minutes के लिए I have to go. जिम जाने के तो पूरा एक घंटा निकालना पड़ता है ना, to be honest. आप जाओगे गाड़ी में, गाड़ी पार्क करोगे, फिर अंदर जाओगे, फिर बाहर निकलोगे, शावर लोगे. इट्स लाइक होल hour and half एक्टिविटी. तो मैं इतना भी अपना टाइम निकाला, जस्ट गो आउटसाइड द हाउस एंड वॉक ऑन, हर जगह कम्युनिटी पार्क्स बने हुए, बाहर यहाँ के वॉकवेज बहुत अच्छे. पाकिस्तान में आप किसी को नहीं कह सकते गो आउट एंड हैव अ वॉक. I mean, I was like, I stayed there for quite some time this year, and I lived in a good area in Lahore, but one of the best areas, in fact. लेकिन मेरे लिए जॉगर्स पहन के बाहर वॉक करना was impossible. There's no walkway. I had walkway. छत पे तो क्या वॉक होनी? I mean, you want for your exercise, it should be like an unbroken sort of half hour, ना कि वो आपकी ब्रेक नहीं आनी चाहिए. तो I used to go to, there was a community park में जाके वॉक करती थी वहां पर. That was fine. लेकिन I just felt कि it's not practical कि first को चलो ये मेरा एरिया अच्छा है, I have a beautiful park to go and walk in, but not everybody lives in areas like that. This is Pakistan. You need to be realistic, right? तो मैं कहती पाकिस्तानी कम्युनिटी में मैं अगर ये एडवोकेट भी करूं कि आप डेली हाफ एन आवर वॉक करें, जो आम इंसान वहां रहता है उसके पास एक्सेस नहीं है, सड़क का एक्सेस नहीं है, फुटपाथ का एक्सेस नहीं, पार्क्स का एक्सेस नहीं. इट्स नॉट वेरी इजी टू एक्चुअली do these things for people living in developing countries. So we are privileged to be living here in Canada कि हमारे पास एक simple exercise है, put on a pair of joggers and go and walk. You can do it. What's stopping you, right?
तो बहरहाल we've gone off topic, keep on going off topic here. ये बहुत important topic है. Honestly speaking, then what would you recommend to the women in Pakistan? How should they go about it? अगर फर्ज करें कि ये facility नहीं है available, they don't live in the most idealistic situations, तो क्या करें? If you are saying uninterrupted walk हो तो. Question is relevant as well. जब हम winter season में आते हैं and जैसे अभी तो COVID में gyms भी बंद थे ना, तो what are your options? तो indoor exercises are definitely there for you. Indoor aerobics are there for you. आजकल ये social media के से YouTube पे I have found tremendous मतलब भरा हुआ exercise के free programs आपको मिल सकते हैं. YouTube पे हर जगह मिल सकते हैं. तो I tell women कि भी आप घर में just invest in getting an exercise mat, बहुत सस्ते से मिल जाते हैं. Get on any YouTube aerobics program that you like. There are so many different types of things you can do, and just put on some music and just get some exercise. Or kuch samajh nahi aata, get a skipping rope and skip on the spot. Whatever works for you. Or kuch samajh nahi aata, put on some music and dance to it. Right? The idea is just get into some activity. And then I think Pakistan में भी खाली facilities कुछ लोगों के लिए है, not everybody. आम public शायद afford नहीं कर सकती. Personal trainers हैं, special gyms हैं, swimming pools हैं औरतों की, वो सब activities हैं. But then again, we have to, I think, talk about something that's more easily accessible to people. So simple home exercises are something that anybody can do, right? For myself, I use home exercises for my own exercise. I don't go to a fancy gym. I have not done anything else over there. टाइम की बात होती है ना कि मुझे वो आधा, मेरे पास अगर दिन में आधा या पौना घंटा निकल रहा है, I want to use it as best as I can. तो मैंने अपने लिए एक्सरसाइज मैट लिया हुआ है, 2-4 छोटे से वो लिए हुए डंबल्स लिए हुए, एक्सरसाइज बॉल लिया हुआ, just कहीं भी बिछा के I do my half an hour exercise and it works wonders for me. कुछ करने की जरूरत नहीं होती. And I think I would love to say one important thing here कि exercise से mood पे बहुत effect पड़ता है. अगर लोग समझते हैं कि जी सिर्फ आपकी physical health उससे improve होती है, it's not just आपकी mental health भी बहुत ज़्यादा improve होती है. अगर आप exercise regularly करेंगे, you will not need any kind of external medication to elevate your mood या आपके mood symptoms को control करने के लिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. सिर्फ exercise ही आपको इतना बना देगी कि आप जो है वो आराम से ये 3-4 साल जो है वो आपके निकल जाएंगे and you won't need any external support for that. So yeah, खुद तो मैं नहीं करती, लेकिन मैं आप सबको encourage करूंगी कि exercise बात के उस स्टेज पे अगर और इतना टाइम निकाल अपने लिए ना, it helps you more tremendously. And while we're on this topic, counseling, therapy, right? These are all ways women can go for where they don't have to take medications, right? To cope with this stress, anxiety, जो कुछ भी mood swings उस time में हो रहे होंगे ना. तो ये सब modalities हैं which work wonders for women, right? बस थोड़ी सी commitment चाहिए होती है कि commitment to spend time with yourself, for a change. Make yourself a priority. ये मैंने देखा, it's very, very important for the middle-aged woman कि भी you need to make yourself a priority. That is true. Is there anything else that you want to add, Dr. Zarish, before we end this show? I think we've had quite an intensive talk. इतनी information मैंने दे दी है, पता नहीं if it was easy for people to even grasp that. Because when I start talking, I just more like we will get it in the feedback. We would love to hear your feedback. We would love to hear what questions you have. If Dr. Zarish is available, probably we can sort of take her responses to those. You wanted to say something? Go ahead. Yeah, this is a good way to proceed. We can leave it open to the public. If there's something they want me to talk about, important questions, and if they want me to clarify something on this topic as well, we can do that for next time. That's a good way. For sure. Thank you so much, Dr. Zarish, for taking out this time. You work 6 days a week. एक दिन मिलता है छुट्टी का संडे को, उसमें भी मैं जान खा लेती हूँ. तो thank you so much from the bottom of my heart. I'm hoping that this is not just the first and the last time that we are meeting. और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे. Know what the community thinks, because I think I can then contribute more if they let me know what they want to know about, कि किस तरीके से क्या उनको हेल्थ केयर की एडवाइस चाहिए, क्या बातें वो करना चाहते हैं, क्या myths clarify करना चाहते हैं. I think this is the biggest thing, society के myths जो होते हैं. I think it's good we give them an open platform so they can talk about stuff. Yeah. Perfect. Sounds good. Thank you so much once again. And और कोशिश करेंगे अगर next week इंशाल्लाह दोबारा हम session कर सके. All depends on your availability. So if you are available, I would love to take you on and we can discuss some other topic inshallah.
Yeah. Till then, take care of yourself and signing off from here. Hopefully आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा. आप लोगों के फीडबैक का बहुत बेचैनी से इंतजार रहेगा. प्लीज लेट मी नो इफ देयर इज एनी स्पेसिफिक टॉपिक यू वांट अस टू डिस्कस. वी विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट फॉर यू. और दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें और इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे एक नए शो में. जब तक के लिए इजाजत दीजिए. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.